Hello friends, today we are going to discuss what is difference between nearest and next. In this video your concept will be more clear. इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नियरेस्ट और नेक्स्ट कैसे और कहाँ इस्तेमाल करें. So stay with us at the last. If you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe and click on bell button for new videos. Okay then let's come to the topic. नियरेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा फासला. Nearest means the shortest distance away. For example, Mumbai is the seaport nearest to Europe. मुंबई सीपोर्ट जो यूरोप के करीब है. Where is the nearest phone box? करीब वाला फ़ोन बॉक्स कहाँ है? इन दोनों सेंटेंसेस में nearest का मतलब करीब है. नेक्स्ट का मतलब है अगला, जैसे कि एक के बाद दूसरा. Next refer to one of a sequence of things coming one after the other. For example, Kareem's shop is next to the post office. करीम की शॉप पोस्ट ऑफिस के साथ ही है. My uncle lives in the next house. मेरे अंकल अगले घर में रहते हैं. इन दोनों सेंटेंसेस में नेक्स्ट का मतलब अगला है. Fill the blank spaces with nearest or next. This is the dash post office to my house. A nearest, B next. A is correct. This is the nearest post office to my house. The pillar box is dash to my house. A nearest, B next. B is correct. The pillar box is next to my house. The burglar was taken to the dash police station. A nearest, B next. A is correct. The burglar was taken to the nearest police station. His house is dash to mine. A nearest, B next. B is correct. His house is next to mine. The dash railway station is 2 miles from here. A nearest, B next. A is correct. The nearest railway station is 2 miles from here. अब आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या फ़र्क है. प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. थैंक यू.